Welcome, friends, to our Thinking Thursday today. And today we are going to be talking on chapter 3, which is Karma Yoga from the Bhagwad Gita. And Shakuntala ji और मैं ये session लेने वाले हैं. I will start with introducing chapter 3 to everybody today. So let me begin with introducing Karma Yoga. And I'm going to introduce it with a little video, a little clip, just to summarize what the chapter 3 is all about. And then, of course, we will take the verses. So, life is like a game of billiards. And let us see how life is like a game of billiards. So, we enter a pool of action and knowledge when we come to this earth. And this is our school where we will be together with many others. And all the others make a big difference to our lives. And what does God do? He arranges us within a high frequency vibrating field of molecules, as you can see, which materialize into matter. And this is where we will experience cause and effect of our own actions. We will have to bear the responsibility of our actions. We will be placed in the center, as you can see, with many others. And God is chosen for us, by the way. And then God, He removes the limitation and grants us free will. This free will that we are having includes the opportunity to understand the connection between the path of knowledge and the path of action. The path of action is a means to an end, not directly, but only as a preparation to the path of knowledge. This path of knowledge is attained by our involvement in action. This is very important. Action and knowledge go hand in hand. Now, we were given both these paths, both these methods, because the active and the contemplative could seek and discover the eternal nature of the very self. Now, in spite of this, we have stayed anchored to our limitation. Once we enter this illusionary world, we are now in this field of experiences and situations, circumstances and events which somehow us and pull us. And what happens is that somehow we get attacked from the most weakest side. We are pushed, but we return back, as you just saw, to the playing field. And we get attacked again and again, which causes a pattern in our life. That's exactly what happens on a billiard table, as you can see, to that little ball that is really ourself. Now, in time to come, we actually realize that we are just one among the many, and we decide to play this game happily rather than become attached to the consequences either of pain or pleasure. Our ego drops in time to come. We understand that we are just a part of the cause of this illusion. And once you know that, you will not suffer individual consequences. And this is very important. So, the game of billiards, if you ever watch it or you ever play it, remember it's nothing but the illusionary space of Maya. Now let us understand action versus inaction. Let's take the first 6 verses of the Bhagwad Gita. And let's look at verse 1. Arjuna says, "If it be thought by you that knowledge is superior to action, O Janardana, why then do you, O Krishna, engage me in this terrible action?" Then, let's look at the next verse. Arjuna says, "Tell me that one path by which I for certain can attain the highest." He goes on,
Krishna says, in this world, there is a twofold path. As I said before, the path of knowledge of Sankhya Yoga and the path of action of yoga. He continues to say, it's very self-explanatory, what I just spoke about is in these first 6 verses. Krishna said, not by non-performance of actions does man reach actionlessness, or nor by mere nirvana does he attain perfection. This is a very important verse. We will try and understand more about this. Krishna continues to say, none can ever remain even for a moment without performing action. I think this is self-explanatory for all of us. For everyone is made to act, helplessly indeed, by the qualities of Prakriti. As we know, Purusha and Prakriti. And what is Prakriti? The sense organs, the organs of action. So all this is going to come together, and even if we want not to act, we will not be allowed to not act. That's what Krishna is saying. Verse number 5. Now, if you look at the 5 verses, it's very interesting because Arjuna is confused, as we all are, right? He cannot give up the terrible fight. He's confused because why can't he give up the terrible fight? It seems he has forgotten Krishna's words that the Mahabharata war is not Arjuna's his cousins. It's not also his personal choice. But it is a war where 2 armies fight. It represents a clash of ideologies. The Pandavas were convinced about the spiritual morality of the war, but Arjuna could not see this in his egoism and vanity. He could not understand that if Krishna is supporting the path of renunciation, then why is he being told to fight the war? And doesn't this happen to all of us at times? You know, we don't want to be rude, we don't want to insult somebody, we don't want to say something inappropriate to somebody. But somehow, we kind of want to give up that. We don't want to say something to that person. But the situation is such that if you don't say this, then a wrong will not become right. So just like Arjuna, we are also caught at times in such particular situations. Now, if you continue to understand the verses, Arjuna is perplexed, confused, but somewhere he knows that life cannot be squandered away. And what does that mean? It means, Krishna says, that life is not just about producing, acquiring, hoarding, spending wealth. It's much more than that. And sometimes, masters, gurus or masters or even avatars like Krishna, they use these contradictory, conflicting words and phrases. It is not to confuse us, but to make us understand the polarity inherent in the functioning of this physical universe. I always say that we must understand the polarities in which we live. And Krishna too is explaining this, that, it's not that he's trying to confuse you or conflict you. It's just that he wants you to understand the kind of polarity in which this physical universe makes us exist. And he makes us understand that you have to become aware of temptations which invade our spiritual sensibility, and they move us away from conscious living. So he's just trying to tell Arjuna that you need to understand that this is not your battle. It's a battle between 2 different ideologies, and you will have to decide which side you are on. You will have to decide. You can't run away from this situation. Now let us look at, we are living in samsara. And what does that mean? Arjuna is explained this by Krishna in the verses 7 and 8.
Now, as we know, there is desire. We are slaves of our desire. We want things, either which we don't have, or that what we are not satisfied with, or we just want them in plenty, right? There are three things in the way desire works. One, we don't have something, we want it. That's also desire. We have it, we're not satisfied with it, we want more of it. Third, we want something in plenty. The child already has a box of crayons, he wants one more. Then he wants one more. Then he wants one more. The use is the same, but he just wants it in plenty. Right? Don't we do that? Especially women, in the kitchen. Yeah, they buy one vessel, another vessel, third vessel. I always tell people, that how many vessels do you need to cook your food? With 3 vessels? That's all. Right? But we have so many vessels. So this is very important to understand. Desire. If you have a desire, how it is being manifested in your life? Do you feel you have something of more in plenty? Actually, you don't need it, like shoes. People keep buying shoes, watches. एक घड़ी है, टाइम दिखा सकते हैं, तो घड़ी की भी जरूरत नहीं है. You have a phone, a smartphone, right? I want you all to just think, do you feel desire? You have a desire of something in your life, and if you look at the cupboard, or you look at your kitchen, or you look at the closet, do you feel you have something in plenty? Anybody can tell me. Do you feel you have something in plenty? Yes, handbags, purses. Handbags. So many. Mobile. Some people have 3, 4, 5 mobiles also. I don't know whether they use it, but they just think that नहीं, इसके लिए ये mobile चाहिए, इसके लिए वो mobile चाहिए. Anything else that we feel we have in plenty, we don't really need it. Clothes. Clothes, yeah, we have, like, my God, like clothes and clothes and clothes. We go to a shop and we say, isko hum khareed, let's buy this one. We already have. We don't need it. एक ही तो शरीर है, कितने कपड़े पहनेंगे हम, right? You can't keep. We are not emperor with new clothes. कि दिन में हम 10 कपड़े बदलेंगे, right? So desire, ये बहुत important चीज है when we live in samsara to understand. Now, what does this desire lead to? Krishna says all this. I mean, he's a psychologist, friends. Krishna is truly a psychologist. And that is why the Bhagwad Gita really is a life manual. It's a manual that helps us to understand our life, okay? Now, let us see what he says next. He says, desire leads to our thoughts. At every moment a thought comes, observe the texture and quality of your thoughts. Now, please mute yourself. Mute yourself. Everybody, please mute themselves. Mute karo sabko. Yes, ma'am. Done. Every desire, friends, leads to our thoughts. I'm sure you will agree to that. The texture, the quality of our thoughts is directly proportional or conditioned or controlled by our desire. Do you agree? You have a desire, leads yes. to a thought, and that thought controls or conditions the desire. So it feeds each other. Thoughts then begin to get expressed in the outer world in the form of actions. So there's desire, there's thought, and there is action now. Our actions, because they are governed by our desires, lead us to act in an ignorant manner. And this is where ignorance comes in. Because our thoughts, our actions are linked to our thoughts are linked to our desires, we are acting actually from our desires, right? We're not acting from our action. Our action is not separate from our desire. Now, this leads to ignorance because it's governed by our desires. These ignorant actions then get embedded in our intellect. And eventually, now what do you mean by the intellect? Means the power of discrimination. We are not able to discriminate. ये सही है या गलत. मुझे लेना चाहिए या मुझे नहीं लेना चाहिए. Because it is governed by temptation, by desire. Now, because these ignorant actions get embedded in our intellect, and eventually, what happens? We get caught in samsara,
And this again leads to desire. Right? So this is really how karma in samsara is working. We are acting ignorant action. Our intellect gets colored by it. We continue living in the samsara, again governed by our desire. So this is the cycle of karma that takes place in samsara. But let us say, what Krishna says is, the Supreme Lord functions when we go beyond desire to desirelessness, which leads to the mental condition of thoughtlessness and a life of actionlessness. This state of actionlessness is not a state of running away from your duty, but doing purifying action, which is prompted by knowledge and values related to yourself. This action, performed in the spirit of sannyasa, leads to perfection. So, karma in sannyasa is this cycle. Desirelessness leads to thoughtlessness, leads to actionlessness. Purification leads to purification, which we can do with various kinds of yagnas, which we will talk about. But Krishna says knowledge helps you to, leads you to actionlessness, leads you to thoughtlessness, and leads you to desirelessness. And this is the cycle of sannyasa. So अगर आपके पास चाहा है, desire है, then you will have to understand that this desire is going to lead to ignorance. But if you work from desirelessness, you don't need this any longer. You give it up. And how will we give it up? We'll talk about that in the next few slides. Now let's look at the karma of agitation, because as we're living in samsara, there is agitation. The mind keeps repeating sensuous thoughts. Repeated thoughts create deep impressions. These thoughts create a channel. हम क्यों एक ही चीज बार बार करते रहते हैं? हमें पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम करते रहते हैं. क्यों? Because repeated thoughts, repeated ignorant thoughts creates deep impressions. These thoughts now create a channel. जब भी मेरे पास ये डिजायर आती है, यही विचार आते हैं और वही एक्शन होता है. This channel has a fixed direction. I'm not able to change. That is how bad habits are formed, right? You're not able to change. You're not able to get out of the habit. Now, the internal agitated flow corresponds to the external agitated action. Right? अब अपने आप को देखिए. अगर आपके पास कोई बुरी आदत है, let us say you don't put a cap on the toothpaste, right? Or you have other bad habits. When you think of somebody, चाय पीने की आदत. चाय पीने की आदत. हाँ, मैं चाय पीती नहीं, उससे मुझे वो ध्यान आता ही नहीं चाय का, कॉफी का. But शकुंतला is right. चाय पीने की आदत. और भी कई आदतें हैं. Of course, smoking, alcohol, वो तो है ही आदतें. But छोटी छोटी हैबिट्स. आप कोई बोल सकता है आपकी कोई ऐसी हैबिट? If you understand the karma of ये जो मैंने स्लाइड डाली है एजिटेशन की, कब आपको होता है एजिटेशन? Negative thoughts. Sorry? Negative thoughts. Bad thoughts. हाँ, right. और Doctor OCD. हाँ, correct. Obsessive thought Yes. affects you. Your mind creates a deep impression. Oh, this is not right. If I touch this, this will happen. You know, if I say a bad word to somebody, something bad is going to happen to me, or something like that. Or if I don't wash my hands a number of times, then something bad will happen to me. So these repeated thoughts are creating impressions, creating a channel, and the channel has a fixed direction, and the internal agitation eventually leads to external agitated action.
Okay? Even when you want something and then you don't get it. Yeah, You really want something, you don't get it. correct. Correct. That's another one as well, isn't it? Right. So this is how we have to understand why we are not able to give up a bad habit or an action that is actually giving us grief or sorrow. क्यों हम उसे निकाल नहीं बाहर करते? तो कृष्णा ने ये हमें steps दिए हुए हैं. This is exactly what is happening to you. So the agitated action eventually leads to that desire or thought. If you don't change that, the action is not going to change. So again, So, it Doc, comes to working on your thought. is impatience a part as an action of this agitation? Yes, yes. Okay. In- Okay. Yeah, there is a thought. I have to do it fast. I have to Correct. hurry up. Yeah. Thought okay, Yeah. leads to an action, a quick Correct. action, but it actually goes wrong. Correct. So the Correct. thought is the thought is then coming from desire. So what is the desire? I have to be perfect, or I have to finish this in this much time. Then people are going to feel, oh, I've done it perfectly. So the desire Correct. is approval. Correct. So if you trace back all actions that you want to change to the desire, then you Okay. will obviously be able to work around it. Got it. Got it. The problem क्या है that people only work with either the action ये मत करो Correct. अभी तुम now don't smoke अच्छा ठीक है so don't smoke but what is the thought the person is having behind that we Correct. don't want to investigate. What is the desire? That is far away. The person has even forgotten why he started smoking in the first place. Correct. So Correct. unless you go back to the desire, Krishna says, you will not be able to move out of samsara into sannyasa. That situation will not take place. And this is exactly what Krishna is telling us. He also tells, that there are lots of people who show how spiritual they are. But internally, they are affected by envy, anger, resentment. And Krishna has in verse 7 actually called them hypocrites. Correct. He says that there are these people who live this shameless lives, filled with vices. They speak about discipline and spiritual fulfillment, but actually their action does not show that at all. Okay, so internally, जब तक सफाई नहीं होगी, तब तक आप अपना act बदल नहीं सकते. So he is completely against people who say they are very spiritual externally, but internally they are not. But now we don't have a microscope to see what people are feeling internally, right? Correct. That's for each person to understand that if internally आप झाड़ू नहीं मारेंगे, आप sweep नहीं करेंगे, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, तो आपका action colored होगा इन सब चीजों के साथ. So we have to understand this. This is very important. Okay, we have to work with Jnana Yoga, knowledge. And that is why the path of knowledge is so important. We have to, Krishna says, we have to marry the path of action and the path of knowledge. If you marry the two together, then you can get out of the cycle of samsara. Just by action you cannot, because जब तक knowledge नहीं आएगा, तब तक you will not be able to move out of अविद्या. आपको विद्या की जरूरत है, तब आप अपना कर्म या एक्शन सही तरीके से कर पाएंगे. So Krishna is a big, he favors the marriage of action and knowledge. And that's really what all these verses till 16, which I'm going to do, speak to us about that. Okay. Now I'm going to show you a couple of pictures, and when you see that picture for a few seconds, see it, just see what happens to your mind. Okay, I'm going to show picture one by one. Just see what happens to your mind as I show the picture. Alright, so here's the first picture, an airplane. I'm going to give you a few seconds. Next picture, a few seconds to observe your thoughts in your mind.
Third picture. One more. And one more. And the last. So I'd like some feedback from you all. As you saw each picture, were there some thoughts? Were there some images in your mind? Was there some kind of memory that came to you? Did it take you away from the task at hand? Did you go somewhere else in those few seconds? Anybody? Anybody can tell me what happened as you watched the pictures. Can I start? Go on. So when I saw the plane first, it reminded me of my daughter who stays in London, and how I'm so longing to fly to her and spend some time with her in the month of May. The second picture, it told me, it felt like I wish I was as carefree as that picture was. Right. The third picture of the lady meditating on a lakeside or the seaside or the beach, or whatever it looks like, but I desire or I want that thing for me, is the thought. I want to do that someday. The burger, I love burgers, but I try to avoid it. So I just smiled when that picture came on. Okay. And when the kitten came on, the first, my voice also said, Ole Baba, because I love animals, and that feeling of love and affection just came up. Right. And I love you forever and ever. My husband and my friends, they came into my thought, and that's Right. how I feel about everyone in general. Right. So that was my thought. Lovely, very nice. So, just like Ajanta explained how her mind traveled, our mind is not static, as you have just seen and Ajanta has shared. Our mind travels away in different directions, like she spoke about her daughter, and then, so many thoughts must have come associated with the daughter. She said, I'm missing her, or I'm waiting when I'll go and meet her. So there was emotion, there was some past memory when she must have left her daughter in London, and this whole future that I'm going to meet her, and the feeling of love, right? So our mind has a habit of traveling in different directions, and we are not attending to the task at hand. And this is an example to show कि जब हम खाना Okay. बना रहे होते हैं, या हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, या हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारा माइंड एंगेज नहीं है उस टास्क के साथ में. हमारा माइंड अलग अलग दिशाओं में घूमता रहता है. And Correct. sometimes, when we are cooking, salt के बदले sugar डाल देंगे, या कुछ something will fall down, or somebody's call is coming, and our mind is somewhere else, right? So our mind, controlling our mind is so difficult, and Krishna actually says that to us. He says that we spend our life's energies in the field of sense objects, right? These are all sense objects, right? But we are unable to conserve this large quantity of energy. हम उसे कंजर्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ वहाँ जा रही है, अलग अलग दिशा में जा रही है, right? Now the intention actually should be, if we can direct this conserved energy towards a profitable field of activity. Imagine, he's speaking about this, so much of clarity he has, okay? Now, if we can approach a profitable field of activity with this conserved energy, with complete detachment, he says, not because of one's desire, but because of you are approaching the profitable activity to conserve the large amount of energy so that the task gets done at hand with detachment. Okay? And then he gives us the guidance where he says not only our senses, but our organs of action, karmendriya, should also spend time in the appropriate field of activity.
So our sense objects, our organs of action, everything together should be engaged in that activity. This, he says, is the economics of thought leading to right action and living. He says this, okay? Economics of thought is the science of right action and right living. Now, isn't that amazing? Whosoever, this is the verse, whosoever controlling the senses by the mind, O Arjuna, engages his organs of action in Karma Yoga without attachment will excel. This is verse 7. This is बहुत ही सुंदर है ये, right? अगर हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी टास्क, कोई भी चीज करने से पहले हम अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करें. My sense organs are completely engaged with the task. My thought is completely engaged with the task, and so is my body. My leg is not moving. My hand is not going to reach out for some water. My eyes are not going to be looking here and say, "Arey yaar, these friends are eating in the canteen, you know, और मुझे ये काम करना पड़ रहा है." So Krishna Amazing. just says focus. हम हमेशा कहते हैं ना बच्चों को फोकस करो. But Krishna is explaining to us focus का मतलब क्या है. Correct. Focus का मतलब है कि my thought and my action is in sync, and then I can live right. And this is exactly what verse number 7 tells us. तो इसके बारे में हमेशा याद रखना. Put this verse in your mind. Whosoever controlling the senses by the mind, O Arjuna, engages his organs of action in Karma Yoga without attachment, he excels. Okay, this is a very, very powerful verse. Now let's look at verse 9, which I really love. And it's a wonderful verse because it speaks about if actions in this world, because he's talking about detachment, right? About detachment, how do we get detached is the question. लोग पूछते हैं ना कि detached कैसे हो भाई? So he says in verse 9, if the actions in the world are performed in the spirit of sacrifice alone, you will be free of all attachments. Sacrifice, the word sacrifice has come. And this is what he calls yagna activities. These are the activities of sacrifice which bring us freedom from vasana. And yagna in this verse 9 means self-sacrificing work undertaken in a spirit of self-dedication for the blessing of all. I want you to just hear this again. Yagna, according to Krishna, is self-sacrificing work undertaken in a spirit of self-dedication for the blessing of all. वो खुद के बारे में बात नहीं कर रहा है. मेरे लिए, no, for the blessing of all. Such action, Krishna says, is self-liberating. मोक्ष चाहिए ना, तो ऐसा एक्शन करो, तब आपको self-liberation मिल सकता है. That means people who act from a spirit of service and dedication, okay, can be freed from poverty and sorrow. Again, I repeat, when people act from a spirit of service and dedication, you can be freed, or a community can be freed from poverty and sorrow. Arjuna की problem ये है कि he has got too attached to individuals in the opposing camp, and he wants to run away from the action which he has to perform. Krishna क्या कहते हैं? वो कहते हैं, the Lord says, if you are qualified for the action, it is your duty to act. बहुत अच्छी बात है. एक principal school का, he is qualified to rusticate a child who is naughty. He is qualified for that, but he refuses to do it. Correct? Similarly, if you are a CEO of a company, appraisal होना है. It's an appraisal of your friend, but you have to do it. You are qualified to tick her off or to tell her you are not doing your work properly. But what do?
You don't. Why? Because you will lose a friend. The desire that your friendship will be compromised, so you don't do it. So ये statement बहुत सुंदर है. If you are qualified for the action, it is your duty to act in the right in the right kind of direction, right? As we know, the pandemic, everyone who was qualified to act, the soldier was qualified to protect the borders, so many people came in to help various states. The doctor, qualified to heal, he did his job. The ward boys, nurses, sweepers, garbage collectors, policemen, everybody did their job. Do you agree, friends? Give me a thumbs up if you did agree. Everybody, जितने जितने मैंने अभी नाम लिए, everyone was qualified to do their job, and they did their job, right? But citizens who were supposed to sit at home, right, and not get in the way, I don't know how many citizens really did that job. So Krishna is saying कि अगर आप किसी काम के लिए, कर्म के लिए क्वालिफाइड है, कार्य के लिए क्वालिफाइड है, तो आप वो कार्य करिए तो आपका कर्म सुधर जाएगा. सही है? So this is very important and it's very interesting to understand this. Now I'm going to show you a picture. So this is what fruit will you pick up from this fruit tray? बताइए कौन सा फ्रूट आप पिकअप करेंगे इस फ्रूट ट्रे से? banana and grapes. शकुंतला क्या पिकअप करेगी? Banana first. बनाना. ठीक है. और कौन क्या पिकअप करेगा? Strawberry. Strawberry. श्रीलक्ष्मी will pick up strawberry और Pineapple. I'll pick up the mango and the strawberry. Orange. pick up two. चलो. Now we know she has lot of desire. प्राची Orange. प्राची क्या पिकअप करेगी? Orange. ऑरेंज. सोच समझ के बोल रही है. ऑरेंज. ठीक है. और Pineapple. पिकअप करेगा? दीप्ति Pineapple. पाइनएप्पल. ओके. I will pick Now- up orange. हाँ. Who's going to pick up soup? अच्छा. What are you going to pick up? Suruchi will pick up orange. Ruchi? Okay. Orange. Right. Right. Now I have given you a choice, but do you like orange, so you're going to pick it up, right? You like banana, so you're going to pick it up, right, Shakuntala? Yes, yes. You like strawberry, Sri Lakshmi, so you're going to pick up strawberry, right? Yeah, ma. Yeah. Somebody likes pineapple, so you're going to pick up pineapple. So Yes. you picked up the fruit that you liked. Now suppose Shakuntala, इस थाली के अंदर बनाना होता नहीं और मैं ये थाली आपको देती फ्रूट ट्रे, तो विल यू पिक अप समथिंग? यू से नो मैम, आई एम सॉरी. नहीं, ग्रेप्स ले लेती मैं फिर. हाँ, तो आप ग्रेप्स ले लेती. ठीक है. हाँ. चॉइस है आपके पास, करेक्ट. बट Yes. सपोज इस थाली में ऐसी कोई चीज है जो आपको पसंद नहीं है, नहीं लेती. आप लेती कि नहीं लेती? नहीं लेते फिर. करेक्ट. Ma'am, I would take the thing if it was healthy. राहुल? If any fruit was healthy, I might have taken that. All right, great, wonderful. So now Rahul says none of these fruits are healthy. Rahul, is No. that- Here I would take banana and orange, but I probably would. Like grapes. Oh, all right, ठीक है. Now suppose this was a prasad tray. It was not just a fruit tray; it was a prasad, and the prasad was something that you don't like. What would you do? फिर तो ले लेती मैं. Definitely, I will take it. It's prasad. साथ है तो लेंगे, खाएंगे. Correct. थोड़ा ले लेते. थोड़ा ही होता है, प्रसाद थोड़ा ही मिलता है. हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मेरा विचार मैं बदल सकती हूँ. अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रसाद है, तो आपका जो प्रीवियस थॉट्स थे वो अपने आप चेंज हो गए, राइट? यस, हो गए. थॉट्स चेंज बिकॉज मैंने सिर्फ प्रसाद वर्ड का इस्तेमाल किया. सो अगर ये जो कृष्णा कह रहे हैं, सेल्फ डेडिकेटेड
work is nothing but your prasad to society. Like humility, like love, kindness, loyalty, love. अगर ये सब चीजें like प्रसाद हम दूसरों को दे, offer this, what will happen? They will pick it up. Activities जो आप कर रहे, काम जो आप कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. Because what is actually yagna? Yagna है self-sacrificing work undertaken in a spirit of self-dedication for the blessing of all. इससे उनका भी फायदा हो रहा है और आपका तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है. इसी को कहते हैं प्रसाद बुद्धि. So the Lord says आपको ये बुद्धि डेवलप करनी है, आपका इंटेलेक्ट, ओके, बुद्धि जो है वो प्रसाद बुद्धि डेवलप करिए. Moment you develop this kind of buddhi, what will happen? Every action that you do, what you are qualified for, will be taken in the spirit of service. फिर इसमें ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है. मैं हर एक्शन से I will be happy because I will be learning so many different and more qualities. Getting the idea about prasada buddhi, which is mentioned in the verses 10, 11, 12. Now, everybody must have heard of Kamadhenu. Who is Kamadhenu? ये एक गाय है, देवताओं The की cow. गाय है जो हाँ, सारी इच्छाएं पूरी कर देती. correct. So कहते हैं कि Kamadhenu was a mythological cow that was supposed to belong to sage Vashishta. Vashishta की ये mythological, मतलब the story basically, from which all desires can be got. Now this basically means, इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अचीवमेंट इम्पॉसिबल नहीं है आदमी के लिए. If he acts in the spirit of cooperation, then nothing is impossible. Okay? It's a story, but what the Lord says to us is, इसका मतलब ये है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है अगर आप स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन से साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं, दूसरों के लिए, खुद के लिए काम करते हैं, तो शायद कोई भी अचीवमेंट आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है. नाउ व्हाट डज ही मीन बाय कोऑपरेशन? नाउ यू कैन सी ये कामधेनु के अंदर सभी देवी देवताओं के चित्र है. देखा आपने? Now why are these देवी देवता के चित्र इस कामधेनु के भीतर है? Because verse 11 to 16, Krishna speaks to Arjuna about the productive potential. Speaks about the productive potential of the deity which is granted to the devotee. That is also not too much. So now you can see कि कामधेनु मतलब हमारी सभी इच्छाएं and all our productive potential is actually represented by the Devi Devta. आप देख सकते हैं? अब each Devi and Devta is your creative potential, which exists in the universal supreme one and representing the multidimensional four forms, which are the 33 Devi Devta. Now, आपके अंदर ये सब potentials है. You have the potential to earn money. You have the potential to learn maybe music, dance, some kind of potential which takes you on stage and gives you kind of recognition.
You have the potential for knowledge. You have the potential to do service and charity, right? सभी देवी देवताएं जो है वो they represent some potential is what the Lord says. और ये pictures जो डाले हुए हैं they are just pictorial form of your potential, right? So इस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए हम यज्ञ कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा कॉल्स द लॉ ऑफ सेवा और सर्विस. So let us understand the definition. So when your productive potential is manifested in the spirit of sacrifice and dedication, you create profit. So yagna, that is the spirit of action, plus power, deva, the productive potential, leads to annam, money, profit. So the productive potential, when cherished through self-dedicated work performed in the spirit of sacrifice, will provide the worker with the desired object. This is what he calls the law of life. The law of sacrifice is, of course, doing the yagna activities, the various activities that we do in the spirit of sacrifice. And when you combine these two together and earn profit, the law of life, then we can earn profit. And we have every right to the riches to enjoy sharing it among ourselves. हमारे पास जो है वो हमारा है. अगर आपने हार्ड वर्क किया है, डिसिप्लिन से आपने कमाया है, सही तरीके से आपने कमाया, enjoy it, of course, have fun with it, Krishna says. But go one step further also. And charity is also something that is extremely important. And verse 13 में कृष्ण ये कहते हैं that the righteous who eat the leftovers of the sacrifice are freed from all sins, but those sinful ones who cook food only for their own sake will eat but sin. So यहाँ पर भी कहा जाता है कि charity, dedicated work, sacrifice ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now there are these 12 different types of yagnas. As we proceed, chapter 4 speaks about some of these, chapter 5 also speaks about some of these. So chapter 3 के जो 5 यज्ञ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज, और दूसरे जो यज्ञ हैं we will speak about them as we proceed. Okay? So एक है ब्रह्म यज्ञ. There is देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य या वीर यज्ञ and भूत यज्ञ. What is ब्रह्म यज्ञ? स्वाध्याय करना जरूरी है. नॉलेज, आपके पास जो भी नॉलेज है, the Lord says you have to share it with others. आपको उपयोगी बनना है. किसी भी फील्ड में जहाँ पे आपकी कोई टैलेंट है, स्किल है, हुनर है, आप उसमें उपयोगी बन सकते हैं. आप स्वाध्याय करिए, गेन नॉलेज, और फिर उस पथ पर चलिए एंड गिव इट. इफ यू डोंट गिव इट देन यू विल बी इन डेट. आप पे ऋण चढ़ेगा अगर आप वो नहीं करते तो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रह्म यज्ञ का मतलब है टू रीपे गॉड्स डेट बाय शेयरिंग योर नॉलेज. चाहे वो स्क्रिप्चरल नॉलेज हो या जो भी आपके पास नॉलेज हो, आप उसे शेयर करिए. आपको उपयोगी बनना है. दैट इज ब्रह्म यज्ञ. सेल्फ डेडिकेटेड वर्क, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वर्क, सेल्फ डिवोटेड वर्क. इन वॉट एवर नॉलेज यू हैव, you are supposed to share. Otherwise आप ऊपर जाएंगे इसी नॉलेज के साथ. God will say that what is this? तुमको मैंने इतनी टैलेंट, इतना हुनर दिया, तुमने किया क्या उसका? कुछ नहीं, nothing. Right? Did you share it with one person? No. So
Brahma Yagna. Okay? Then we have Dev Yagna. Satsang karna, बहुत important है. Rituals also have their own place because they develop discipline. जब हम कहते हैं हम जप माला करिए, मैं सुबह 6 बजे करती हूँ, कल भी 6 बजे करूँगी, परसों भी 6 बजे करूँगी, तो इसका मतलब क्या है? It develops discipline. वो देव, कोई भी देव देवी का जब हम पूजा करते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं, फास्टिंग करते हैं, राइट? फ्राइडे को हम संतोषी माँ का व्रत रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम डिसिप्लिन फॉर्म कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली गेटिंग डिसिप्लिन्ड बाय invoking or praying to a particular deva, and that deva or devi is giving us that quality of discipline, consistency. These things are being developed in all of us. So satsang karna, ये हमारा क्या है? This is nothing but a kind of a satsang, जहाँ हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, बोलते हैं, शेयर करते हैं. So देव यज्ञ ये भी बहुत जरूरी है, because it is a way to repay the angels, the Devi and Devtas, and they will then grant us our wishes. Correct? तो अगर आप discipline Friday fasting करते हैं, या फिर आप जो भी है, anything else that you do, any particular ritual that you do, you wake up in the morning at 4:30 and you do aarti in the morning, or you go to the temple, let's say kind of barefoot. Many people do that. Or you get up at 4:35 and you sit in dhyan. All this develops certain powers, certain skills, certain talents of that particular deva or devi, or your potential that improves. That is what Krishna says. Pitra Yagna. सुबह सुबह हमने बड़ों के पैर छूते, अगर कोई बड़े आपके साथ रहते तो आप उनके पैर छूते हैं, पूजा करते हैं, एंसेस्टर्स को याद करते हैं, राइट? श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं. All this is involved in Pitra Yagna. Place a flower, you go to the temple and place a flower at the feet of the Lord, whatever you do. Yeah? That will help you कि आप अपना ऋण, एंसेस्टर्स का ऋण, पितरों का ऋण जो होता है, वो आप चुका सकते हैं. ठीक है? You are actually enhancing your productive potential by doing this also. And then of course there is Manushya Yagna, which is again to do with your ancestors, but it's really more to do with your family. जो भी unfinished काम आपके परिवार जनों ने छोड़ा है, some ancestor wanted to maybe build a temple somewhere, पर वो नहीं कर पाए, आप वो कर सकते हैं. So आप अपना कर्म सुधार सकते हैं. So that is something that he also recommends. From your family tree, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है who has been kind of discarded or let's say forgotten, or that person is God knows staying where, किसी को मालूम ही नहीं वो कहाँ है, तो you can seek that person out, help that person out. तो इस तरह का ऋण भी होता है हमारे लिए. तो ये एक सर्विस, सेल्फ डेडिकेटेड सर्विस हम कर सकते हैं. That is also something that we can do. And then this of course Bhuta Yagna, which is to do with again your ancestors, to repay the debt of ancestors, and to pray to the species which support us, whether they are plants or animals. So they say offerings can be done to the crow, the dog, the cow, and of course fire हम करते, Agni Dev को हम. Ma'am, would Manushya Yagna be? Sorry. Ma'am, would Manushya Yagna be the family duties and all? हाँ, yeah, that's right, yeah. So इस तरह से ये 5 यज्ञ chapter 3 में दिए गए हैं. But there are many others. There are 12 types of yagna that the Bhagwad Gita speaks about. There is Deva Yagna, inward, and I've also told you what each one develops now.
If you go a little deeper, you will understand how each thing develops what. So you have Brahma Yagna, which is self as a sacrifice in complete service. आप अपना पूरा तन मन धन से किसी की सेवा करो तो वो ब्रह्म यज्ञ में आएगा. देव यज्ञ is more towards inward equanimity. In the third yajna, when you have self control, that means all your senses आप control करें. किसी ने आपको एक अच्छा सा कुछ दिया, to eat your favorite sweet meat, and you have got diabetes, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको. इंद्रिया यज्ञ, which develops self control. Correct? Then you have mano yagna, mind being non-receptive to senses. आप उस तरफ देख ही नहीं रहे. किसी ने बोला कि आप पार्टी में जा रहे हो, have a nice drink. बोले नहीं, मैंने तो ड्रिंक्स छोड़ दिए. And then you go in the party. You will not allow your mind to travel to that place at the bar where the drinks are being served. Your senses and your mind, दोनों को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा. That is called mano yagna. Okay, mind being non-receptive to senses. Then you have atma samayana yagna, self-restraint, discrimination of senses and organs of action. आप अपने सेंसेस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने मन को भी उस तरफ जाने नहीं दे रहे, और आप अपना हाथ भी नहीं बढ़ा रहे अगर कोई आदमी आएगा आपको ड्रिंक देने के लिए. So you are now getting more and more controlled, right? You are becoming ek chitta. The whole chitta is now directed towards the right action. Then there is dravya yagna, wealth, all the accumulation of wealth. It can also mean all the accumulation of everything, your clothes and your shoes, and you donate it. You donate it to others. That is the part of dravya yagna. Then there is tapo yagna, which is self-denial, which also is fasting. Fasting is nothing but self-denial. Or you go barefoot, or you don't eat for a day, or you don't eat lunch, or you give up a fruit which you like the most, or you give up one particular sabji that you like the most. Self-denial. It is tapo yagna. All these yagnas is for purification of the mind, friends. कोई भी यज्ञ आप करिए, everything leads to purification of the mind, and purification of the mind is important for sannyasa. What I showed the initial slide, okay? Then you have Can I ask a yoga question? yagna. Let me finish this first. Okay. Yoga yagna is upasana. It means devoted worship of the Lord. Right? Union with the Lord. Lord and me are the same. Right? I bend down, I pray, I just do in front of the Lord, I meditate, I go to the temple regularly, I read. Everything for me is part of what I do is part of the Lord. Upasana karna, Ishwar ki. Then there is Swadhyaya yagna, self-study. पढ़ाई लिखाई करना किसी भी चीज को लेकर, right? So I wish to, Shakuntala and I wish to thank the group that you all have given us the opportunity that we are studying the Bhagwad Gita and we are sharing it with all of you. Then of course there is Jnana Yagna, renounce ignorance. Knowledge, जब आपको ज्ञान मिल जाएगा, self study आप इतना करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ज्ञान यज्ञ आएगा ही आपका. Your work will be nothing but an act of service. You have renounced all ignorance. तब क्या होता है? इंसान कपड़े कम खरीदता है, कबर्ड में जगह ज़्यादा हो जाती है, जूतों के शेल्फ में जगह ज़्यादा हो जाती है. Actually there is clearing and cleansing of your home. Your home becomes like a temple, है ना? आपका घर मंदिर बनेगा कब? जब आप जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप डिक्लटर करेंगे, तब तो घर बनेगा मंदिर ना. करेक्ट? मंदिर में कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ भगवान की मूर्ति होती है. अब ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी कि अगर हमारे घर में सिर्फ भगवान की मूर्ति हो और कुछ ना हो.
न सोफा न कुछ ऐसा, हाँ, आसन हो बैठने के लिए. So renounce ignorance. Here it's not about the objects only. It's also about your thoughts, your desires. So renounce ignorance. Then of course there is Prana Yagna. ये बहुत interesting था जब मैंने इसके I read this. Okay, withdraw all perceptions. So inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. उसको भी आपने, you don't even know you are breathing. You know, just breath and you and your breath and you and your breath. That's it. Prana Yagna. All the energies are only now in this breath. And then, of course, the last is Deha Yagna. Total purification by diet regulation. Imagine Krishna spoke about all this 5,000 years ago. All these 12 types of actions, self-dedicated actions. अगर हम कोई भी एक ले, anyone, I think it will be a great thing for all of us to experiment. हम करते भी है, we do fasting करते, ये करते, वो करते. पर अगर हम सोच ले कि भाई 16 सोमवार करूँगी, या मैं हर संडे को for the next 3 months I will not eat, then we will understand कि वो एक discipline हमारे अंदर आ सकती है. So this is really, I thought it was very interesting to share. And the topic of Yagna is in chapter 3, Karma Yoga, chapter 4, chapter 5. So he discusses it across the Gita. But I thought I'd share, and then maybe later on we can connect to what we have studied today. And then of course I want to end this with this particular thing, how to live in samsara. आपको संसारा में जीते, how do we live now with all this knowledge that we have gained? When you are doing your duty, the Lord says, do not forget the name of God. And when you are chanting the name of God, forget samsara. So I leave you with this thought that when you are doing work, engaged in society, do not forget the name of God. Chant at the back of your mind the name of God. And when you're chanting the name of God, forget samsara. Tall order, but we can definitely start doing it. So yes, so this is my part of the lecture, verses 1 to verses 16. And now Shakuntala will take over, and she's going to speak about verses 19, 22, 27, the most important verses. But I've just set the ground for you to understand them, and then I think Shakuntala will take it forward. So I'm going to stop sharing, and Shakuntala will now share slides. Thank you, ma'am. And wait a minute. Yes. So I'm just taking 3 verses only, जो 3rd chapter में ही आगे का है. तो 3rd chapter का 19 जो वर्स है, ये कुछ वर्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने लिया है. वर्स में भगवान कहते हैं कि काम करते रहो. काम कैसा करना है? पारायण काम करना है. व्हाट इज धर्म पारायण काम? राइटिजियस ड्यूटी. ऐसे नहीं आप कुछ भी काम करते रहो, नो, इट शुड बी राइटिजियस, प्रॉपर काम करना है. और कैसे करना है? परफॉर्म्ड विथ नॉन अटैचमेंट. उसमें आपको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अनासक्त होकर, आसक्ति नहीं होनी चाहिए ना. व्हाट इज अटैचमेंट? अभी तक हम ये समझते हैं जनरली कि मोह माया यही अटैचमेंट है. अटैचमेंट सिर्फ लोगों से ही नहीं होता है. अटैचमेंट हमारा हो सकता है कि हम ये काम करेंगे तो बदले में हमें ये मिलेगा. दैट इज ऑल्सो अटैचमेंट. यहाँ पे तो भगवान काम में अटैचमेंट के लिए भी मना करते हैं. एंड देन दैट बिकम्स गॉडली. जब हम रिटर्न में कुछ नहीं चाहेंगे तो वो डिवाइन वर्क होगा. नाउ अभी इसी वर्स को हम
पूरा प्रॉपर देखते हैं तो संस्कृत में ये वर्ड्स इस तरीके से लिखी गई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अब आप लोगों से मुझे कुछ आंसर्स चाहिएंगे कि यहाँ पे कार्यम लिखा है और फिर कर्म लिखा है। ये वर्स 19 है चैप्टर 3 की। क्या आप समझते हैं कि ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है? एनी आंसर्स? आप अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए प्लीज। क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या ये टाइपिंग मिस्टेक है या जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया गया या जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया गया? एनी गेस? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, गलती। क्योंकि कार्य कर्म कर्म की पहचान करवाता है और कर्म से ही कार्य बनता है। काफी नॉलेज है। गुड गुड। नॉट, दिस इज नॉट अ मिस्टेक बट डेलिबरेटली लिखा गया है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो परमहंस योगानंदा ने जो कमेंट्री की है उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि कार्य का मतलब होता है मटेरियल एक्शन, वेरस कर्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल एक्शन। हम अपने लाइफ में डेली मटेरियल एक्शन तो करते ही हैं, जो जीवन में बंधे हुए हैं, जो भी सांसारिक कार्य हम कर रहे हैं वो सभी के सब मटेरियल एक्शन है। वेरस जो भी हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, पूजा पाठ है, ध्यान है, या और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि ये हम सत्संग कर रहे हैं, ये भी स्पिरिचुअल एक्शन में आएगा। तो इस तरीके से ये कोई मिस्टेक नहीं है, कोई टाइपिंग एरर नहीं है, ये सिंपली भगवान ने दोनों कामों को अलग अलग बताया है ना। क्या चाहते हैं अभी इसी में आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कुछ पिक्चर्स। ये फर्स्ट पिक्चर क्या है? आप क्या क्या दिख रहा है इस फर्स्ट पिक्चर में आपको? ऑफिस सेटअप। वर्क प्लेस। यस, वर्क स्पेस, ऑफिस सेटअप। तो टोटली हम ये सोचते हैं कि इसमें किस तरीके का एक्शन होगा, मटेरियल एक्शन होगा कि स्पिरिचुअल एक्शन? मटेरियल। एग्री, इसमें मटेरियल एक्शन होगा। अब मेरे क्वेश्चन है, क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है स्पिरिचुअल एक्शन की? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? यस, नो? कोई आंसर हो सकता है और आंसर करेक्ट है। Yes. यस, एनी गेसेस? कोई बताना चाहेगा? So ethics, following ethics, being true to your job, being true to your employees, not being discriminatory, are all karyas to the karma that you are probably professing at your workplace. Good, very nice answer. Yes, one more thing can be done, madam. बताइए जब हम काम कर रहे हैं तो साथ में स्मरण कर सकते हैं, भगवान का नाम लेते हुए काम कर सकते हैं। ये ध्यान तो उधर आपने ये तो आपने इसका जिस्ट ही बता दिया। थैंक यू। चलो अच्छा है, इसमें हम और भी काम कर सकते हैं। सपोज जो हम काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, वी आर बीइंग पेड, उसके हमको सैलरी मिलती है। लेकिन कभी कभी किसी कलीग को कोई प्रॉब्लम आ गई, हमने उसकी हेल्प कर दी, हमको उसकी सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल एक्शन यहाँ पे हो सकता है। You can also do charity work. या इट कैन बी करेक्ट। नाउ ये एक फैक्ट्री का सेटअप है, पुराने फैक्ट्री का सेटअप है। यहाँ पे भी नाउ एज यू ऑल नो यहाँ पे भी पॉसिबल है। देन द नेक्स्ट यहाँ पे ये एक स्कूल है, स्कूल में भी नॉर्मल आप टीचिंग वगैरह करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें भी चैरिटी या स्पिरिचुअल एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट एक पिक्चर आती है सत्संगी, तो ये तो डेफिनेटली है ही एक स्पिरिचुअल एक्शन, लेकिन ये स्पिरिचुअल एक्शन भी कभी कभी मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है इफ इट इज बीइंग पेड सॉर्ट ऑफ अगर होगा तो इसमें मटेरियलिज्म इन्वॉल्व हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि स्पिरिचुअल नहीं है, वो भी ये है। चलो गुड आंसर्स हैं। कुंतला जी, अगर वो इसमें सत्संग में अगर इट इज फीडिंग आवर ईगो देन इट बिकम्स अगेन मटेरियलिस्टिक। करेक्ट। तो दोनों ऑप्शंस आपको इसमें मिलते, करेक्ट, एग्री।
अब नेक्स्ट आता है, ये हमारा एक थिंकिंग थर्सडे का ही पिक्चर है, ठीक है। ये किस तरीके का एक्शन है आप खुद बता सकते हैं। इसमें स्पीकर्स आते हैं, लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं। आप लोग क्या हैं, किस तरह की एक्शन आप कह सकते हैं इसको, मटेरियल एक्शन और स्पिरिचुअल एक्शन? It's more of spiritual action. It's spiritual action. It is 100% spiritual action. Who is doing the spiritual action? Is it only speaker? क्या स्पीकर तो ठीक है, चलो मान लिया। Then what's about listeners? All of us. Yes, all of us. Listeners नहीं होंगे तो स्पीकर किसको सुनाएंगे? हुई कि क्या? नहीं होगी। तो लिसनर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। ऑर्गेनाइजर्स जैसे कि गरिमा है, वो बैकग्राउंड में काम कर रही, सबको अरेंज करना है, ये सब करना है, बिल्कुल सामने भी नहीं आएंगे बट दे आर वर्किंग। बहुत सारे और जैसे वर्षा जी हैं, बहुत सारे स्पीकर्स को लाती हैं, तो दे आर ऑल ऑर्गेनाइजर्स, वो भी काम कर रहे हैं। व्यूअर्स हैं, बाद में भी कुछ लोग देखेंगे। तो ये सब एक स्पिरिचुअल एक्शन हो रहा है और अकेले हम कोई नहीं कर रहे, कोई भी अकेला नहीं कर रहा है, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग, बिकॉज इसमें हमें कोई रिटर्न में कुछ मटेरियलिस्टिक चीज कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी ये हो गया। एनीवेज, दिस इज ₹5। ओके, सो कैन यू इमेजिन कि हमको ₹5 में कोई ईटेबल चीज मिल सकती है? पार्ले जी ग्लूकोज। करेक्ट, वो जल्दी आ गया, बट एनीवेज नेवर माइंड। हाँ, पार्ले जी का जो पैकेट है ये ₹5 में आता है। कितने आप बता सकते हैं ये कितने टाइम से ₹5 में आ रहे हैं? कितने टाइम से आपने देखा है कि सिर्फ ₹5 में मिल रहा है? कितना टाइम हो गया? क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो यहाँ पे ये जो पार्ले जी जो भी कंपनी है, दो ये अपने अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, यहाँ पे इसको जस्ट ₹5 में सेल करने के पीछे इसका एक मोटो है, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा मासेस को कम से कम प्राइस में समथिंग कैन बी गिवन जो ईटेबल, जो गरीब लोग भी ले सके, जो गांव के लोग भी ले सके। और समवेयर, और ऐसा नहीं है कि वीट के दाम नहीं बढ़े हैं या और चीज के दाम नहीं बढ़े हैं, बट देन दे हैव देयर टेक्निकल थिंग्स, वो इसको कैसे भी मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें लॉस उठा रहे हैं, वो इसको मैनेज करते हैं। मे बी बिस्किट का साइज तो छोटा कर दिया होगा, वो आराम से पैसे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया, बिकॉज उनका मेन एक एम ये है कि हमें कम पैसे में गरीब को, मासेस को, रूरल एरियाज में भी कुछ देना है जो ईटेबल हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, किसी की थोड़ी भूख मिट सके। सो दिस इज व्हाट वी कैन से गिविंग बैक टू सोसाइटी। बहुत सारी कंपनीज ऐसे कर रही हैं, ये एक एग्जांपल मैंने इसका दिया है। सो ऑल आई कैन से इज इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, डेफिनेटली ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें स्पिरिचुअल एक्शंस कैन बी डन। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था और आपने बताया भी था कि ये सारे अलग अलग प्लेसेस हैं, लेकिन इन सभी प्लेसेस में कुछ स्पिरिचुअल एक्शंस पॉसिबल है। ओके, और आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग इसको खरीद के फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों की भूख मिट सकती है। कई बार ये उपाय है, सुमन जी बैठी हैं, ऐसे कई और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं, वो सब जानते हैं कि सन, सूर्य की शांति के लिए ये उपाय किया जा सकता है। सन रिप्रेजेंट्स वीट, और वीट के उसमें अगर हम ये देते हैं तो हमारा जो सन अगर मजबूत नहीं है हॉरोस्कोप में, तो वो और मजबूत हो सकता है। एनीवेज, तो ये तो एक एरिया हुआ, लेकिन इट कैन बी डन। इस तरह की भी चैरिटी हम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो काउंटेड।
Shakuntala ji, like small biscuits, the small baker children, they love it. यस यस, बट ये कोई तो कंपनी बना रही है ना, इतना अफोर्डेबल भी है, इजीली भी है, और इट इज ऑल्सो गिवन इवन जब कोई इनिशियली बीमार होता है तो सबसे हल्का फूड लेना है, देन डॉक्टर सजेस्ट दिस, इन अ वे इट्स गुड. चलिए, कम बैक टू दिस वर्स अगेन. तो हम इसका थोड़ा थोड़ा मतलब समझ रहे हैं कि राइटिजियस ड्यूटी परफॉर्म्ड विद नॉन अटैचमेंट इज गॉडली. तो जो भी हम काम करते हैं जो राइटिजियस है, धर्म के अनुकूल जो काम है, उनमें बिना अटैचमेंट के अगर हम काम करते हैं तो वो डिवाइन है, दिव्य है. ओके, देन इस वर्ष से हमारी क्या लर्निंग है? हर वर्ष हमें कुछ न कुछ लर्निंग देता है, और कहते हैं भगवद गीता में अगर किसी एक वर्ष की एक लर्निंग भी हमने अपनी लाइफ में उतार ली तो वो बहुत है, उसकी जिंदगी बन जाए. सो फ्रॉम दिस वर्स हमारी लर्निंग क्या हो सकती है? थिंक व्हाट वी कैन डू विच विल बी गुड फॉर वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरों का भला हो सके, और टू द नेचर. जरूरी नहीं है आप ह्यूमन बींग्स की मदद करो, आप नेचर की मदद कर सकते हो, और एनी क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी क्रिएचर के. आजकल बहुत गर्मी है, बर्ड्स को पानी चाहिए होता है, उनके लिए पानी रख सकते हैं. बाहर स्ट्रे डॉग्स, काउस, इनके लिए भी हम पानी भी रख सकते हैं. तो वो किस तरीके से इसको, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, बदले में हमें कुछ रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. ओके, एंड विदाउट एनी अटैचमेंट. जहां पे हम बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हम अटैचमेंट वहां पे नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट माय लर्निंग फ्रॉम दिस वर्स. ओके, एक और चीज इसमें आती है कि an innate duty must be performed without attachment as it leads to equanimity. आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट अपना भगवद गीता का लेक्चर हुआ था तो मेन टॉपिक था इक्वानिमिटी. तो इस तरीके से इस वर्स को हम पीछे के लेक्चर से जोड़ भी सकते हैं कि इक्वानिमिटी की बात हमने की थी पहले, कि चाहे सक्सेस हो, फेल्योर हो, दुख हो, सुख हो, हार हो, जीत हो, अगर हम उसमें इक्वानिमिटी, हम समता बनाए रखें, ना हिलना डुलना, ना तो ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा परेशान होना है, देन हम ज्यादा बेहतरी से काम कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट, जब हम बिना अटैचमेंट के कोई काम करते हैं तो हम काफी हद तक इक्वानिमिटी की तरफ बढ़ते हैं. तो पीछे जो इक्वानिमिटी की हम बात कर रहे थे उसी ऑर्डर में ये एक हमारा स्टेप हो सकता है. और जब हम अटैचमेंट नहीं रखते तो कर्म के बंधन से हमको मुक्ति मिल जाती. जब तक अटैचमेंट होगा हम दूसरे का भला नहीं सोच सकते. जैसे ही हमने अटैचमेंट नहीं रखा तो उससे हमारे काम से दूसरे का भला हो सकता है, और हम कर्म के बंधन से जो बनते हैं, बार बार कर्म के बंधन बनते हैं, और उसके लिए हमको बार बार इस जीवन में आना पड़ता है. जीवन मृत्यु का चक्कर चला रहता है. उससे अगर छूटना है तो हमको कर्मों के बंधन से मुक्ति लेना होगा, और उससे धीरे धीरे जैसे मुक्ति मिलेगी तो धीरे धीरे हमारा ये एक कदम मोक्ष प्राप्ति की तरफ हो सकता है. इट इज जस्ट वन, नॉन अटैचमेंट इज जस्ट वन स्टेप, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है. देन कम्स, ये पिछले क्लास में हमने इस इक्वानिमिटी की स्लाइड्स को देखा था. तो जस्ट टू रिमाइंड यू कि चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, हमारा इक्वानिमिटी अगर बनी रहे, हमारे माइंड में अगर उथल पुथल नहीं हो रही हो, और दोनों को हम सेम तरीके से रहें, तो यही भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं, जो एक्चुअली में उनके लिए कहा था लेकिन है ये हमारे लिए. अर्जुन तो खुद बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने सब कुछ कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया सो दैट हम जैसे लोग इसे अपने जीवन में अपनाएं. तो ये तो हो गई थी वर्स 19. अब हम आगे चलते हैं, वर्स 22 की बात करते हैं.
देखिए वैसे भी इस चैप्टर का नाम है कर्म योग, तो यहाँ पे भगवान बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं. लॉर्ड लेज एम्फेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय साइटिंग हिज ओन एग्जाम्पल. भगवान खुद अपना एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि मैं भी काम करता हूँ. खुद अपना एग्जाम्पल देके बता रहे हैं. ऐसा क्यों? इसको हम अभी पढ़ते हैं. उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल कि पीछे और भी श्लोक है. इससे जस्ट पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि जो इस दुनिया में श्रेष्ठ मनुष्य है. अब श्रेष्ठ का एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग नहीं हो सकता. सुपीरियर कह सकते हैं, ग्रेट मैन कह सकते हैं, और बेस्ट पर्सन कह सकते हैं. बहुत सारे मीनिंग लगा सकते हैं, लेकिन जो वर्ड श्रेष्ठ हिंदी में है उसका मीनिंग वही है. तो जो भी इस सोसाइटी में, इस दुनिया में जो श्रेष्ठ होता है, लोग उसका अनुसरण करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं. इसीलिए भगवान खुद काम करते रहते हैं ताकि लोग यानी कि हम उसका फॉलो करें. सो भगवान क्या कहते हैं इस वर्ड्स में? देयर इज नथिंग इन द 3 वर्ड्स. ये तो हम एक वर्ड में रहते हैं, दैट इज भूलोक. ये तो पृथ्वी लोक है. इसके अलावा स्वर्ग लोक और पाताल लोक या और भी है, कारण लोक है, सूक्ष्म लोक है, ये सब भी है. ये इसको भौतिक लोक बोलते हैं, मटीरियलिस्टिक. बट एनीवेज यही नहीं, और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे भगवान की ही सत्ता चलती है. सब जगह भगवान ही है. तो देयर इज नथिंग इन द 3 वर्ड्स ओ अर्जुना दैट इज फॉर मी टू डू. मेरे काम करने के लिए कोई काम है नहीं तीनों लोकों में. नॉर इज देयर एनीथिंग अनअटेन्ड. पूरे तीनों लोकों में ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो. मेरे पास सब है, मेरा ही तो है ये सब कुछ. ओके, दैट शुड बी अचीव्ड. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुझे अचीव करना हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है. यट आई एंगेज माई सेल्फ इन एक्शन. फिर भी मैं काम करता रहता हूँ. क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि जो एक श्रेष्ठ मनुष्य जो काम करेगा, जो सुपीरियर जो काम करेगा, लीडर जो काम करेगा, दुनिया उसको फॉलो करती है. सिर्फ इसीलिए मैं काम करता रहता हूँ ताकि मेरे पास और लोग काम करें, मुझको फॉलो करें तो वो भी काम करें. अगर भगवान काम करना बंद कर देंगे तो और लोग काम करना बंद कर देंगे, तब तो दुनिया चीज ही हो जाएगी. और आगे ओके, आगे चलते हैं थोड़ा. ओके, नाउ लॉर्ड लेज एम्फेसिस, ये वही चीज है, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय साइटिंग हिज ओन एग्जांपल्स. लॉर्ड कहते हैं कि इवन एज आई एम नॉन अटैच्ड टू द कॉस्मोस एंड यट आई एम प्रेजेंट इन एवरी एक्शन. भगवान किसी से भी अटैचमेंट करके नहीं बैठे, लेकिन वो हर एक्शन में हर जगह मौजूद है. सो ईच ऑफ माई डिवाइन ऑफरिंग, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं इसलिए मेरी सभी संतानों को मस्ट डू सम वर्क to help my deluded creation and its mortals to come back to me. कि इस दुनिया के वो लोग जो थोड़े से अज्ञानी हैं, जिनको अभी इस चीज का नॉलेज नहीं है, उनको ये रास्ता दिखाना चाहिए. अल्टीमेटली तो सबको भगवान के पास ही जाना है, मोक्ष प्राप्ति ही होनी है, आत्मा सबके वहीं जानी है, तो उसकी तरफ वो डायरेक्ट करें. All must work since the Lord of the Cosmos has chosen to work. क्योंकि भगवान ने काम करना चुना है, इसलिए हम सबको काम करना चाहिए. यहाँ पे हमको 2nd चैप्टर का 47 वर्स जो हम पहले डिस्कस करे थे, वो भी यही था. भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि तू कर्म करता रहे, कर्म फल में तेरा
कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि तुम काम ना करो। तेरी अकर्म में भी रुचि नहीं होनी चाहिए, मतलब तेरे को काम ना करे ऐसा तेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली सबके लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि भगवान भी काम कर रहे हैं। अब एक सवाल आता है, भगवान क्या काम कर रहे हैं? भगवान की तो ये इमेज है हमारे हाथ में, बैठे आराम से शेषनाग की शैया पे रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इमेज है। जबकि एक छोटा बच्चा है, उसको स्कूल जाना है, तो उसको पता है कल एग्जाम है, उसके लिए उसको पढ़ाई करना पड़ता। ओके, देन घर की जो हाउस वाइफ है, गृहिणी, उसे पता है खाना बनाना है, सबसे बड़ी टेंशन है सब्जी क्या बनानी है, उसे दुनिया भर के काम है। वो ये सोचती है भगवान को क्या काम है, तो आराम से लेटे हैं, सृष्टि बना दी, शेषनाग के शैया पे आराम कर रहे हैं। देन कोई ऑफिस गोइंग पीपल है, उनको ऑफिस में काम करना है, तो काम बाकी सब हमको लगता है हम काम करें, भगवान क्या काम करें? कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो आराम से रेस्ट कर रहे हैं। देन कम्स दिस, भगवान कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये 10 महाअवतार है, ये तो महाअवतार है। महा मतलब जो मेन अवतार है, इसके अलावा न जाने कितने अवतार भगवान ने लिए हैं। तो जब जब इस धरती पे जरूरत पड़ती है, भगवान आते हैं और इंटरफियर करते हैं। ये भी एक अवतार ही हुआ है कृष्ण भगवान वाला। तो जब जब जरूरत पड़ती है धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, हम जैसे मनुष्यों को हेल्प करने के लिए भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं और काम करते हैं। ऐसा नहीं है काम नहीं कर। नेक्स्ट, अगर हम ये देखें, ये पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं भगवान। हम तो ये छोटे से यहाँ पे छोटी सी अर्थ में एक हल्की सी जगह पे है, वो तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। वो हर चीज को अपने तरीके से चला रहे हैं। सोचो, एक दिन अगर सन ना आए, सूरज उगे ही ना, बैठ जाए कि नहीं मैं तो नहीं हिलूंगा, मैं जो भी इसकी साइंस है उसके पीछे नहीं जाते, एक बार ये सोच लेते हैं कि सन ने उगने से मना कर दिया, एक दिन आज मैं छुट्टी पे, तो क्या होगा? जहाँ पे दिन है वहां पे दिन ही रह जाएगा, जहाँ पे रात है वहां पे रात ही रह जाएगी। कंटिन्यूअस कई घंटों तक यही चल रहा है, तो सारी सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है, भगवान हर समय हर एक्शन हर जगह मौजूद है और वो पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें काम करना चाहिए। 19 श्लोक में हमने ये देखा कि हमें बिना अटैचमेंट के काम करना चाहिए और जो राइटियस काम है वो करना चाहिए। 22 श्लोक में हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि भगवान भी काम कर रहे हैं जो कि हमारे आइडियल है, तो हमें भी काम करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट श्लोक मेरा आज का है, वो है 27। ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, एंड दिस इज ऑल अबाउट डूअरशिप। हम सबको एमबीएस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, देखिए बड़ा चढ़ा के बताओ, अपने काम को बताओ, सी आई हैव डन दिस। जब आप शो बिस करोगे तभी लोग बाग आपके काम को समझेंगे। तो all actions are performed in all cases by the modes of nature, prakriti. He whose mind is deluded by egoism thinks I am the doer. इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि हर काम प्रकृति खुद, प्रकृति के 3 गुण है सत्व रज तम, उनसे हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ हम जैसे जो लोगों को ईगोइज्म है या जो अनवाइज पीपल है वो सोच रहे हैं कि मैंने ये किया, आई हैव डन दिस, आई एम द डूअर। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हर साल के एंड में स्कूल्स में और बहुत सारे कॉर्पोरेट जगह में सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरना होता है। इसमें मुझे को बड़ी दिक्कत आती थी कि हम अपनी तारीफ क्यों करें। इसमें मेरा एक लॉजिक होता है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। हम क्यों बोले अपने काम के बारे में, लोगों को बोलने दो, सक्सेस को बोलने दो। और ठीक इस तरीके से एक और एग्जाम्पल याद आता है अर्जुन का। जब अर्जुन फिश की आई में, उसको परछाई में पानी में देख के उसको तीर मारना था, तो वो नहीं चला सकता था तीर अगर भगवान कृष्ण ने पानी को स्टेबल नहीं रखा होता।
So this is one of the important quote जो मुझे इस श्लोक से बहुत रिलेटेड लगता है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी. एंड देन ये वाला वही कृष्ण वो अर्जुन जी तीर चला रहे हैं नीचे देख के, लेकिन क्योंकि पानी स्टिल है, दैट मीन्स हमारे आसपास की सर्कमस्टांसेस को जब भगवान हमारे अनुकूल बनाते हैं, हमारे हिसाब से बनाते हैं, तभी हम वो काम कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत अच्छे कुक हैं, लेकिन सपोज वो बीमार हो जाए, उनको फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या वो खाना बना सकते हैं? अच्छा बना सकते? नहीं बना सकते. तो डूअरशिप का हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए. वो अज्ञानी लोग सोचते, ज्ञानी लोग तो ये सोचते हैं कि भगवान ही कर रहा है. यहाँ पे when we realize that these are the sattva, rajo and tamo gun in the person is functioning behind every act, it becomes easy for us not to judge the person. इसमें एक ये भी फायदा हो जाता है कि जब हम ये देखें अगला बंदा गलत काम कर रहा है, तो हम जज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो नहीं, बंदा नहीं काम कर रहा, उसके पीछे जो गुण है, तमो गुण है, वो एक्ट हो रहा है. एनीवेज, हम ऑलमोस्ट काफी लेट हो चुके हैं, तो आई एम अबाउट टू एंड दिस. इस वर्स 27 से मेरी क्या लर्निंग है या जो मैंने आउटकम लिया, मुझे चैप्टर 3 में ये बेस्ट वर्स लगी थी. और उसके बाद में मैंने कोट बनाया था भगवान की ही, उससे, यो गॉड, वॉट एवर इज द बेस्ट, प्लीज गेट इट डन थ्रू मी. ये प्रेयर रोज सुबह शाम करने से आपकी लाइफ में अपने आप जो काम करोगे, आपने भगवान को सरेंडर करके कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे काम होते जाएंगे. So remember, we don't have to think of ourselves as doers. We are just a medium. तो हमको भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो भी बेस्ट है वो आप मुझसे करवा दीजिए. And that's all. This is my learning. Thank you, Shakuntala ji. Thank you. Shakuntala ji. Welcome, welcome. Thank you so much. It was really nice. Thank you so much. Thank you everybody for being here with us. I hope you have taken some gems of wisdom, and thank you Shakuntala, it was lovely. Thank you, ma'am. Thank you everybody for being here, and continue reading the Bhagwad Gita so we can all put our heads together and live a life of wisdom. Thank you.